13 तारीख को है ना? यस सर। नहीं, आज तो डेट 10 है, आज की 10 तारीख है। एग्जाम 13 तारीख को है। ओके, तो हम पहले एनएलएम देखेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू या नीट पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेज नंबर 57 होगा एज पर द मॉड्यूल। यस और नो? यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन फोर्स एंड स्टेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी which changes or tends to change the state of rest. It is called as a force. उसके जो इफेक्ट है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप, चेंज इन मोशन, चेंज इन डायमेंशन, और क्या बच गया? इफेक्ट ऑफ फोर्स। एनी अदर इफेक्ट इज लेफ्ट? रूपाली, श्रुति, कुछ रह गया क्या? देखो जरा। नहीं। What are the balance and unbalanced force? Balance force क्या होता है? The net force acting on a body is 0. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे जो भी फोर्स लग रहा है, ऊपर का, नीचे का, जो भी है, ओके, जो भी फोर्स है, नेट फोर्स इज 0। और अनबैलेंस मतलब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। अनबैलेंस एफ नेट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स इज 0। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है। और क्या लिख सकते हैं नेट और अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स में? बोलिए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? व्हाट कुड द एक्सेलरेशन फॉर बैलेंस फोर्स? 0। करेक्ट। 0 सर। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी होगी? इंस्टेंट कांस्टेंट और 0। अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, 0 वेलोसिटी, 0 एक्सेलरेशन, 0 फोर्स। द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मैन पुशिंग अ बॉक्स is shown in the figure. For this situation, determine the net force acting on the object. तो यहाँ पे 50 न्यूटन, ऊपर नीचे 30 न्यूटन, तो नेट फोर्स विल बी 0। यस और नो? यस सर। है क्या मॉड्यूल है क्या आपके पास? यही डायग्राम देते। चलो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है नीचे का जो फोर्स है, यहाँ पे ये है 30 न्यूटन, और ऊपर का जो फोर्स है यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन, और राइट साइड फोर्स है अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड 50 न्यूटन, और इधर का फोर्स है ड्यू टू फ्रिक्शन 50 न्यूटन। तो सम ऑफ द फोर्सेस विल बी 0। तो यहाँ पे एफ नेट फोर्स 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ बैलेंस फोर्सेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ। बैलेंस फोर्स का डेली लाइफ एग्जांपल क्या है सर? अब बुक ऑन अ टेबल। बुक लाइंग ऑन अ टेबल, करेक्ट, और बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बराबर, 0 एक्सेल। और अनबैलेंस फोर्स का कार मूविंग ऑन द रोड with the variable speed, बिजी रोड। यस सर। busy road. What do you mean by term inertia of rest? Explain it using an example. Inertia is the tendency of a body to oppose the change of state. ऐसे टेंडेंसी बॉडी की, ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होने देती, which try to remain at a state of rest or state of uniform motion in a straight line. एक तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, एक तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जाएगी, तो वो जो टेंडेंसी है which is called as inertia. What example we can give? इसका एग्जांपल क्या देंगे इनर्शिया का? सर इनर्शिया ऑफ मोशन का बस जब ब्रेक मारती है तब। When we are traveling in a bus and bus is standing, okay, so when the brakes are applied on a bus, so we get forward या backward jerk after applying brake? Forward. ओके, इसलिए बेल्ट बांधा रहता अपने को। कार के अंदर जो बेल्ट लगाते, वो बेल्ट इसीलिए लगाते जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हमारा ये जो सर है, जो फोरहेड है, वो आगे ऐसा टच नहीं होना चाहिए, समझे? या फिर एकदम एक्सीलरेट किया तो भी पीछे नहीं जाना चाहिए, तो बराबर टाइट रहता है, अपने को, अपने बॉडी को टाइट बांध के रखता है बेल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इनर्शिया हो गया. A ball is moving on a frictionless horizontal surface and no force is applied on it. Will its speed decrease, increase or remain same? क्या होगा? And same. Remain same. Correct. On which physical quantity does inertia depends on? Mass. Inertia depends on mass. Mass. Sir, Mass. mass. More Yes. the mass, more the mass, more the inertia. Yes, That's why mass is the inertia. State Newton's first law of motion. Every body continues in a state of rest unless it is acted upon by external unbalanced force. Yes or no? नहीं, कुछ तो wrong हो गया Yes sir. नहीं बराबर सर है. यही है. हाँ. Define inertia. It's the tendency of a body to oppose the state of rest or state of uniform motion. Please State जो of change मैंने in- पेपर सेट किया है उसका आंसर प्रॉपरली लिखना है. समझ में आ रहा है? एक ही पेज पे सब आंसर मत लिखो. गिव द प्रॉपर क्वेश्चन नंबर. अगर न्यूमेरिकल है तो गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन दिखाओ, यूनिट दिखाओ. ऐसे प्रॉपरली सिस्टमेटिक सॉल्व करना है. जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाया, बोर्ड पे मैंने जैसे लिखा है वैसा ही पेपर प्रेजेंटेशन मुझे मेजर टेस्ट में चाहिए. नहीं तो बस 5-6 पेजेस का पेपर है और एक ही पेज में सब निपटा रहे. ऐसा कई पेज छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगे, छोटा वाला डायग्राम ऐसा छोटू सा, छोटू डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इधर लिख लेंगे. ऐसा नहीं. डायग्राम टू बी ड्रॉन एट द सेंटर. यहाँ पे सेंटर पे डायग्राम ड्रॉ करना है. समझ में आया क्या? पेपर के सेंटर पे डायग्राम ड्रॉ करना है. और जहाँ पे रे डायग्राम वगैरह है तो वो पेंसिल ही यूज करना है आप लोगों को. Why passengers are thrown outward when a bus suddenly takes a turn? Because of inertia in direction. Yes or no? Inertia of direction. Inertia of direction. Next, page number 61. Page number 61 पे जाते हैं. State and prove impulse and momentum theorem. Impulse क्या होता है? Impulse is the product of, yeah, we can say that the short large force acting on a body for small interval of time. Impulse is large force acting on a body for short interval of time. Short interval of time. तो यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला ये होता है विच इज F इंटू डेल्टा टी. ये फॉर्मूला है क्योंकि हमारा आपने मोमेंटम पेज का नंबर फॉर्मूला. क्या बताया? पेज नंबर 61. चेक योर प्रोग्रेस. यस सर. तो इम्पल्स का डेफिनेशन लिख दिया. मोमेंटम क्या है? मोमेंटम थ्योरम. व्हाट इज द मोमेंटम थ्योरम? लॉ ऑफ मोमेंटम. Momentum before collision is equal to momentum after collision. Yes sir. State Newton's second law of motion. क्या है? Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force Applied and force. it takes in the direction of impressed force. Okay, that is the second law. Second law का जो mathematical term है वो मास याद रखने का. F is equal to mass into Yes, sir. acceleration. तो यह mass can be written as force upon acceleration. या acceleration can be written as force upon mass. ये जो इक्वेशन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन इन फिजिक्स which was derived by famous scientist Isaac Newton. बराबर के नहीं? ये इक्वेशन हर जगह अप्लाई होता है. इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, सेंट्रीपेटल फोर्स हो, वेट ऑफ द बॉडी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, everywhere it is applicable. Yes Is it? sir. Why China and glasswares are packed with a soft material? बोलो कौन बताएगा इसका आंसर? that जो अपना they do not break. ड्यू टू जर्क. तो क्या होता है? मोमेंटम जो होता है, इम्पल्स विल बी लेस. जो फोर्स एक्ट हो रहा है, इम्पल्सिव फोर्स विल बी लेस और टाइम ऑफ इम्पैक्ट विल बी मोर. टाइम बढ़ाता है वो. इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिख दिया था यहाँ पे F इंटू डेल्टा टी, तो उसमें क्या होता है? ये टाइम बढ़ जाता है. टाइम ऑफ जर्क जो इम्पैक्ट वो बढ़ जाता है, इसलिए कम फोर्स एक्ट होता है.
और कम फोर्स एक्ट होने से वो डैमेज नहीं होता है। इसीलिए आजकल जो भी फ्रैगल आइटम है, जैसे टीवी है ना, बड़े बड़े फ्रिज है, जो भी है फ्रैगल आइटम, ग्लास के आइटम, ब्रेकेबल आइटम, उसको हमेशा प्रॉपर पैकिंग की जाती है। बबल रैप्स। मोबाइल मोबाइल बराबर, Yes, sir. मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ टॉर्टाइज एंड हेयर आर मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ टॉर्टाइज दिया है, स्पीड ऑफ टॉर्टाइज एंड स्पीड ऑफ रैबिट। इसको क्या बोलते हैं रैबिट को? एयर, HAR, हाँ ठीक है, रैबिट, कोई बात नहीं। तो यह है 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, द मास ऑफ रैबिट इज 3 kg and that of tortoise is 10 kg. Then which of the two has a greater momentum? Momentum किसका ज्यादा होगा? Momentum is product of mass into Mass velocity. and velocity. Sir, tortoise का. टॉर्टाइज का मोमेंटम, टॉर्टाइज का मास, टॉर्टाइज का वेलोसिटी। तो यहाँ पे टॉर्टाइज का मास कितना दिया है? 10 kg, 10 into वेलोसिटी कितनी टॉर्टाइज की? 2, तो इट इज 20। यस सर। और मोमेंटम ऑफ रैबिट, तो मास ऑफ 5 रैबिट मीटर। कितना है? मास ऑफ मास ऑफ रैबिट रैबिट इज 3 और 3, उसका sir. स्पीड 15। 5. हाँ, तो यहाँ पे मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? टॉर्टाइज का। भले वो स्लो जा रहा है Yes, sir. लेकिन उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम ज्यादा। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये दो फैक्टर पे डिपेंड रहता है, बराबर? यस सर। यस और नो? डिफाइन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज kgf। क्या है ग्रेविटेशनल यूनिट? ग्रेविटेशनल यूनिट of force is kgf और c आएगा ग्राम फोर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 किलो मास, 1 kg मास of a body produces an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kgf इक्वल 9.8 न्यूटन, बराबर है क्या? देखो जरा एक बार, सही है? 1 ग्राम फोर्स 980 टाइम। कैन यू राइट लाइक दिस? या इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको और। अच्छा, प्रचित आ गए क्या? प्रचित, यस सर। कहाँ गए थे भाई? इतना लेट क्यों हो गए? नाश्ता कर रहे थे क्या? स्नैक्स? नहीं सर, वो नहीं था। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 110 kgf। ये इस पे भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, जी याद नहीं अभी पेपर में क्या डाला है। आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 20 kg डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी दी है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस, s is equal to 100 मीटर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यहाँ पे जो फॉर्मूला है F is equal to m into a, लेकिन a कैन बी रिटन एज v माइनस u बाई t। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया है। टाइम दिया है क्या? नहीं दिया टाइम। कैसे निकालोगे? हम इक्वेशन ऑफ मोशन से a निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। Yes, तो sir. v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। तो s इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। तो v कितना है? 25, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 माइनस, अरे रॉन्ग हो गया था हमारा। v इज 5 का स्क्वायर 25 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय
टू, अरे एक्सेलरेशन नहीं ना, लेकिन एक्सेलरेशन निकालोगे सर वहाँ पे a Sir, इक्वल टू हाँ, स्क्वायर माइनस A स्क्वायर equal अपॉन to 2s। दिया है, एस दिया है, बराबर एस दिया है, सॉरी। तो हमको ये निकालनेगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस। यहाँ पे आएगा 25 माइनस 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, तो माइनस 375 डिवाइड बाय 200, तो कितना आएगा? इसको जरा ये कहो, जरा मिनिमाइज करो जरा, रिड्यूस इनटू लोवेस्ट टर्म। 25 का टेबल में आता है क्या? 25 मतलब 25, वो बच्चे कितने, 12, यहाँ पे कितना आएगा रे? हाउ मेनी टाइम्स 15 by 25 के कितने? Sir, minus 15 by 8. माइनस Minus 15 15 बाई by 8. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी विल दिस इन फ्रैक्शन ओनली, इसको फ्रैक्शन में रखेंगे और हमको फाइंड करना है फोर्स। समथिंग वेंट रॉन्ग, तो गड़बड़ हो गया बस। Velocity of the body, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है। मास कितना दिया है? 20 kg। -37.5 आ रहा है क्या? minus 37.5 sir. रेजिस्टिव फोर्स, Minus रेजिस्टिव 50 फोर्स by दबाओ, द ब्रेक लगाया होगा, रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। अच्छा, हाउ कैन वी प्रूव न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ कैसे डिफाइन करोगे फ्रॉम द सेकंड लॉ? रचित, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे मास जीरो हो सकता है क्या? कैन द मास कैन बी जीरो? No, sir. मास कैन नॉट बी जीरो, ओके, बट एक्सेलरेशन कैन बी जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स जीरो होगा, यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो वही तो एक्सेलरेशन जीरो, वही तो है हमारा टू एवरी बॉडी continues in a state of rest unless it is acted upon by external unbalanced force, remain as a rest. Question number 8. An army vehicle of mass 1000 kg is moving with the velocity of 10 meter per second and is acted upon by forward force of 1000 Newton due to the engine and retarding force of 500 Newton due to friction. What will be its velocity after 10 seconds? सॉल्व किया है कि कभी ये? कई बार मैंने एक क्वेश्चन डाला इसमें, सीबीटी में डाला था, अगर आपको याद होगा तो। क्या बोलते हो? हाँ, न्यूमेरिकल आप जब सॉल्व करोगे ना, तो गिवन लिखने का पहला स्टेप देख लो। 7 स्टेप में आपको 7 स्टेप में सॉल्व करना है। प्रचेत आपला मैत्री आहे का रे? प्रचेत, प्रचेत दुनिया नहीं है सर। मैत्री नहीं है? क्यों नहीं आ रहा है वो? डर लग रहा है उसको सोनार सर का? डांटेंगे करके? नहीं, क्यों नहीं आया? कुछ कर रहा है क्या वो प्रचेत? Sir, एनएमसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात। तो यहाँ पे गिवन मास m इज इक्वल टू 1000 kg, देन वेलोसिटी दिया है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टाइम इन सेकंड। is acted upon by forward force, forward force, F forward, तो ये आ जाएगा आपका 1000 न्यूटन। और इंजन एंड रिटार्डिंग, F retard 500 न्यूटन, मतलब रेजिस्टिव फोर्स है due to what will be its final velocity after 10 सेकेंड, टाइम दिया है। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा सब लिखना है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे
तो ये सब गिवन क्वांटिटी लिखना है, समझे। उसके बाद क्या करने का, फॉर्मूला लिखना आपको, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आएगा? A is equal to F upon M. फाइंड करोगे? यस सर, और V इक्वल टू U प्लस 80 से करेंगे फिर। उसके बाद v का फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना बराबर। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो हमको पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, यस और नो? यस सर, 500 न्यूटन 1000 रिजल्टेंट फोर्स आएगा तुम्हारा F फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फोर्स माइनस F रेजिस्टिव फोर्स, F रिटार्ड। तो फॉरवर्ड फोर्स आएगा 1000 माइनस फॉरवर्ड फोर्स 500, तो रिजल्टेंट फोर्स आता है 500। तो यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। 0.5 मीटर पर सेकंड, मास की 1000 1/2। अरे टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम 10 सेकंड्स। 10। अरे इनिशियल स्पीड से शायद, सॉरी यहाँ पे 10 है। यस सर, 15। अगर हो सके तो ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स डालने का आंसर को, ताकि एग्जामिनर क्या करता है, इस पे फोकस करता है। वो पूरा ऐसा स्टेप कभी कभी देखता नहीं एग्जामिनर। अगर आपने ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया ना, तो उसको थोड़ा आसान काम हो जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है? और यूनिट ना है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, जो भी है मतलब, तो यूनिट प्रॉपरली लिखना है, तो उसको भी मार्क्स है। अगर आप यूनिट भूल गए तो आधा मार्क आपका कट हो जाएगा। समझ में आया क्या? कुछ डाउट है श्रुति, ये सब में कुछ डाउट है? हाँ, अगर आपको लग रहा है किसी को डाउट तो मुझे पूछ लो। Find the time in which force of 2 Newton produces a change of momentum 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड in the body. Find the time, force दिया है, force is 2 Newton, force is 2 Newton, momentum, यहाँ पे momentum जो है ना वो डेल्टा पी है, चेंज इन मोमेंटम है ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम बराबर। यहाँ पे टाइम पूछा ना उन्होंने, क्या वास्ता है? हाँ, तो टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय फोर्स। चेंज इन मोमेंटम कितना, 0.4 डिवाइड बाय 2, 0.2 आ रहा है क्या आंसर? हाँ 0.2। यस सर। अरे वाह, सही है आंसर, सही निकला अपना, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, two billiard balls each of mass 0.0 kg moving in opposite direction with the speed 6 6 meter per second and rebound क्या हो रहा है, कोलाइज हो रहा है क्या? What is the impulse imparted to each ball due to the other? कितना होगा इम्पार्ट? प्रचेत कैसे सॉल्व करोगे इसको? क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 62 मॉड्यूल में 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। बिलियर्ड बॉल इच ऑफ 0.0 kg, दिया है सर पेज नंबर क्या था फिर से? 62।
What is the impulse imparted to each ball due to the other? Impulse का फॉर्मूला क्या है हमारा? सर सर बोलिए। पहले दोनों बॉल्स का फाइनल मोमेंटम ले। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? m1 v1 और m2। कैसे सॉल्व करोगे इसको? 0.05 into 6 आएगा, मतलब m1 u1 आएगा पहले और m2 u2। m2 u2 ओके। सो दोनों के आंसर 0.3 आएंगे। सर यू तो 6 मीटर है ना, हमें फाइनल निकालना है। सर अगर दोनों के मास सेम है और स्पीड भी सेम है तो हम उसको mu और mv करके ले सकते हैं। तो mu प्लस mu इक्वल टू mv प्लस mv, तो 2mu इक्वल टू 2mv। ऐड कर दिया ना, आ गए। ऐड कर। अच्छा, इसमें जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। मैं अभी वो नहीं करने वाला यहाँ पे, लेकिन आपको करना है सॉल्व न्यूमेरिकल। पेज नंबर 67। स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है प्रचित, बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 u2। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट लिखना है भाई। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? The sum of initial momentum equal to the sum of final momentum of two bodies when they collide. देखो यहाँ पे क्या दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज if the force applied on the body is zero, like in absence of force, okay, in absence of force its momentum will be conserved. This law is also applicable to system, okay. Law of conservation of linear momentum by third law लगे। तो total momentum before collision is equal to total momentum after collision, or in absence of force the momentum is conserved. Okay, does momentum remains conserved when external force is not equal to zero? Yes, Rachit? Yes, what is the answer? Shruti? Rupali? Can you please repeat the question? Question is like this: the momentum remains conserved when external force is not equal to zero. Yes, Prachit? सर इसका आंसर नो होगा क्या? क्योंकि इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या स्टेट करता है? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो टोटल मोमेंटम इज इक्वल बिफोर कोलिजन इज सेम एज दैट ऑफ द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे नो आना चाहिए, एक्चुअली वी जीरो आना चाहिए फोर्स।
What do you understand by term recoil velocity of gun? Recoil velocity, when we fire the bullet from the gun, right, due to the action force, the bullet move forward, but at the same time, the reaction force exerted by bullet on the gun and the gun recoil back, gun moves backward. तो जब वो पीछे मूव होती है तो इट पजेस अ रिकॉइल वेलोसिटी. समझे? हेलो, जवाब दो यार कुछ. हाँ. Yes, sir. Now question number 4. In the following figure, does the force normal reaction and weight forms an action and reaction pair? Give explanation. ये टेबल है, यहाँ पे बुक रखा है टेबल पे. Normal reaction is up, whereas weight of the body acts vertically downwards. श्रुति, इसका आंसर दो बेटा. बोलो. Who is going to answer? कृष्णा बनकर है क्या? कृष्णा बनकर. सर कौन सा क्वेश्चन? Question number 4, page number 67. What do you think? No Rajat? answer, I guess. हाँ. हेलो, बोलिए. Do the action and reaction forces acting on the same body? No, sir. No, sir. No. Okay, sir. so action force done by the book on the table. Okay, so reaction force exerted by table on the book. तो यहाँ पे action and reaction both are equal and opposite, equal in magnitude, opposite direction. लेकिन दोनों opposite direction, दोनों अलग अलग बॉडी पे है. तो ये होगा they act as the action and reaction force. अभी जैसे देखो यहाँ पे मैं दीवार पे मार रहा हूँ. When I hit on a wall, okay, so my hand is doing action force and the wall is exerting on my hand is reaction force. समझे? अच्छा, रॉकेट किस पे काम करता है? हाउ डज द रॉकेट वर्क्स? वर्किंग ऑफ रॉकेट. Law of conservation of moment. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बराबर. इसमें हाउ डज इट मूव अपवर्ड्स? ऊपर कैसे जाता है? जब वो गैसेस बाहर आते, राइट, आफ्टर बर्निंग द फ्यूल इन द रॉकेट, so gases exhaust, gases move outward in the downward direction. So that is the action force on the gases. But at the same time, the gas exert reaction force on the rocket so that it can move upward. वो ऊपर जाता है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते. 2 blocks of masses 4 kg and 6 kg. M1 is 4 kg. M2 is 6 kg. Are moving in the same direction with the speed, same direction. ये भी जा रहा है इधर और ये भी इधर जा रहा है, same direction. V1 दिया है, सॉरी U1 दिया है 2 मीटर पर सेकेंड. U2 दिया है 7 मीटर पर सेकेंड. They stick together after collision. Find the common velocity if they are moving. What is the formula for common velocity? रचित गया लगता है. रचित, are you there or no? है ना? He is there. So what is the formula for common velocity?
Can we write like this? Yes, sir. Just try to get the answer. 5 meters per second आएगा सर 5 मीटर पर सेकेंड. लेकिन ये कब अगर ये सेम डायरेक्शन जा रहा था. और पूछा क्या पूछा उन्होंने? सेकंड पॉइंट क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन. तो माइनस होगा ना, माइनस होगा ना अपोजिट डायरेक्शन. m1 u1 minus m2 u2. yes or no? Got it? आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. A machine gun fires 20 bullets per second into target. Per second 20 bullets. Each bullet weight 150 gram and has the speed of 800 meter per second. Calculate the force required to hold the gun in position. चलो सॉल्व करो इसको. Very important question exam point of view. चैट बॉक्स में आंसर डालो, सॉल्व करो और चैट बॉक्स में आंसर डालो. आशीष, एनी प्रॉब्लम? नंबर 3 क्या आंसर दिया है उसका? पेज 60 65. Answer is different. चलो लिखते हैं क्या क्या दिला. मशीन गन फायर 20 bullets per second. Number of bullets. Each bullet weight, mass of bullet.
आया सबको समझ में? यस सर। A body of mass 1 kg projected with a velocity of 300 meter per second from a tank of mass 100 kg. What is the recoil velocity of the tank? तो recoil velocity का यहाँ का फॉर्मूला क्या है? m1u1 अभी यहाँ पे इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे ना जीरो आएगा बराबर, और इसका मास कितना 1, वेलोसिटी कितनी 300 प्लस m2 कितना है 1000 100 3 आता है क्या बराबर 3 मीटर पर सेकंड, बहुत सिंपल है। ये सभी रिकॉइल वाला है, ये तो आ जाएगा ना आपको, सेम सेम फॉर्मूला है। An object experiences net zero external unbalanced force. An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with the non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. इसका क्या होगा आंसर आशीष? सर कौन सा क्वेश्चन है? If an object, पहला पेज नंबर 68 पे बोर्ड लेवल एक्सरसाइज if an object experiences net zero external unbalanced force, is it possible for the object to be traveling with the non-zero velocity? बोलो प्रचेत, what could the answer for this? Shruti, वेदांत सिरोरे, पार्थ देवरे, सौरभ शिंदे, हर्ष मस्के, आयुष रमन, मिनल पार, अभिषेक सूर्यवंशी, ऐश्वर्या हिरे, रिया आलूदरिया, बोलो देवाशीष सिंगोटे, स्नेहल कोल्ले, सतेज कोल्ले है क्या? सतेज कोल्ले नहीं शायद। सर्वज्ञ पगार, ईशान चतुर्वेदी, समर्थ काटकर, प्रांजल चौधरी। अरे कहाँ गए लोग, आवाज दो भाई। प्रचेत, वेर आर यू? Excuse me, sir. बोलो। Sir, an object experiences a net zero external unbalanced force. Sir, net zero कैसे होगा अगर unbalanced force? Is it possible for the object to be traveling with the non-zero velocity? अगर बॉडी सर्कुलर में जा रही तो कैसा होगा फोर्स? non-zero velocity.
अगर बॉडी सर्कुलर जा रही तो कैसा होगा? फोर्स कंटिन्यूस एक्ट होता है ना टुवर्ड द सेंटर, और डायरेक्शन चेंज हो रही, तो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। बोलो। सौरभ शिंदे, श्रुति सोनोने, हेलो, what could be the answer? एक मिनट इसका आंसर देखते हैं अपन। बोलो। इसमें स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मोबाइल से? हेलो, यस Yes, सर। कर सकते हैं। नहीं लैपटॉप पे नहीं, ये मोबाइल पे, मोबाइल के स्क्रीन से। सर Yes. जूम मीटिंग चालू करने के बाद वहाँ पे होता है। मोर में जाने क्या? मोर, अच्छा शेयर में जाता हूँ। ऑन द ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। अभी क्या करूँ फिर? ओनली होस्ट कैन दिस मीटिंग। सर आप मोबाइल को होस्ट बना दीजिए। हाँ, मोबाइल को होस्ट बना दीजिए। अच्छा वो लैपटॉप से करूँ क्या? लैपटॉप से करूँ? एक मिनट, लैपटॉप 1+80
May post. अभी वो बोल रहा है बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, स्क्रीन, कैमरा, शेयर, व्हाइट बोर्ड। सर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, हाँ, स्क्रीन। स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, मतलब स्क्रीन हो जाएगी शेयर। नहीं आ रहा है। आपको दिख रहा है क्या? कैन यू हियर? नहीं सर, नो नहीं, मैंने वो लगाया था, डाउट नट लगाया था मैंने। सर मेरे हाँ बोलो। लैपटॉप का स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। हाँ ऐसा ही होगा, बराबर है। ओके ओके ओके। हाँ ओके, लैपटॉप का बंद किया मैंने। एक मिनट अभी। अच्छा, अभी 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 क्या करूँ? अभी लैपटॉप से शेयर करूँ क्या? मोबाइल से करूँ? मोबाइल से ना, मोबाइल से ना। एक ये मिनट, सर मोबाइल आपने से। अगर मोबाइल में वो ओपन किया होगा तो वो मोबाइल से ही कर। नहीं, मैंने जो जो डाउटनट में जो बता रहा है ना, वो मुझे सुनना है, वो दिखना चाहिए आप लोगों को। कैसे करूँ? अरे यार, डाउटनट तो है यहाँ पे। लाउड, अभी शेयर करता हूँ। स्क्रीन पे जाओ क्या? स्क्रीन, कैमरा, क्या वेब यूआरएल, डॉक्यूमेंट, फोटो, सर बॉक्स, स्क्रीन पे। गूगल सर स्क्रीन पे जाइए। व्यूअर है। यूआरएल। नहीं सर, स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जाओ ना, स्क्रीन पे जाओ ना। यस सर। हाँ सर। नहीं आ रहा है। अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। छोड़ो, एक काम करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। सी, अपना टाइम जा रहा है फालतू। इसका मैं भेजता हूँ आपको सोल्यूशन। When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. क्या है? बोलो जल्दी, फटाफट बोलो। Due to inertia at rest. सर inertia of Yes rest. sir, carpet is set into motion and dust particles remain at rest and fall down. Okay. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of bus with a rope? Because of Due to inertia. inertia of motion. Inertia of motion. Inertia of motion. बराबर है। चलो अभी आगे के जो सम से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, वो आप लोग सॉल्व करो। अभी टाइम हो गया है, 6:15 बज गए। ओके चलो, सी यू। Bye Bye, sir. sir. Thank you, sir. Have a nice Thank ऑल you द so बेस्ट much. फॉर एग्जाम। हेलो, पेपर अच्छा Thank you, लिखना है आप sir. लोगों को। पेपर अच्छा Thank you, sir. लिखना है। Thank you, sir. Thank you. आशीष, कैन यू हियर मी? आशीष, हेलो आशीष, आशीष रकीब है, सुन पा रहे हो? सर वो लियो हो गए। अच्छा, ये जो था एक्शन एंड रिएक्शन वाला, क्या था वो क्वेश्चन? एक्शन एंड रिएक्शन, समथिंग वेंट रॉन्ग। प्रचेत, कैन यू हियर मी? प्रचेत, यस सर। ये जो क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है, आशीष बोल रहा है उसका आंसर अलग है। इज टेलिंग लाइक दिस। कौन सा सर था कौन वो? सा एक्शन, क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक्शन 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 रिएक्शन वाला कौन सा क्वेश्चन था वो? आ गया वो, सर वो 4th नंबर का। 4th नंबर था क्या वो? बैलेंस एंड चेक योर अनबैलेंस नहीं। प्रोग्रेस। चेक योर प्रोग्रेस देख में, वो बोलता है एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस है ना, वो कौन से ऐसा। चेक योर प्रोग्रेस।
क्वेश्चन पेज नंबर 63 बोल रहे हो 63 पे सर वो हाँ बुक वो और बुक टेबल वाला हाँ बुक और टेबल वाला देखो यहाँ पे दिया है सर वो पेज 67 नंबर पे है सर any pair of equal and opposite forces is not an action reaction pair. Okay, is not an action reaction pair. बराबर क्योंकि दो both the forces are acting on the different body है ना. Consider book kept on a table. We have seen that the table pushes the book in the upward direction. बराबर. Then why does the book fly up? Does not fly up. It does not fly up because there is another force on the book pulling down. This is the force exerted by earth on the book, which we call the weight of the book. So there are two forces on the book, a normal force N acting upwards applied by the table and a force W acting downwards applied by the earth. एक नीचे और एक ऊपर act हो रहा है. As the book does not accelerate, we conclude that these two forces are balanced. In other words, they have equal magnitude but opposite direction. We can call N the action and W the reaction. We cannot. This is because although they are equal opposite, they are not forces applied by two bodies on each other. दोनों अलग अलग एक्ट हो रहा है एक्चुअली two bodies. So N is applied by the table on the book. Its reaction will be force applied by the book on the table. Weight W is the force applied by the earth on the book. Its reaction will be force applied by the book on the earth. So N and W are equal and opposite. They do not form action reaction pair. They do not form. बराबर वो फॉर्म नहीं करते क्योंकि both the forces acting on a different bodies. It cannot be action reaction. चलो